follow, which costing system you will follow. So you can say that if it is a homogeneous, so I will follow the process costing product by dividing the total cost and the total number of unit produced. Like producing a batch of 1000 bottle of the juice, that is an example of the process costing. Each batch has the standard costing system. So there's a thousand, like if we are producing something, so we will take like some examples here. So when you have a production, so like I want to produce some motor vehicle. So motor vehicle, I can distribute, I can split the activity in the different level of process. So first where I can say that engineering department. Engineering department will do all kind of fitting works. All kind of fitting work. One is called to the engineering. Then after I'll say that okay, from engineering it will go to some finishing. It means all the the accessories, all the coloring and everything will be done in the accessories department. Then I will say that okay, after this finishing department it will go to the sales department, and sales department will sell this type of item. So what will be the process here? So I can now again I tell you, this method is used when you are producing the large volume of identical or homogeneous product. Okay, so this is one good thing. The second important thing that I said that okay, I want to have the production for motor vehicle. So I just split the process into the three departments. So first department I say that okay, this is my engineering department. The other department I say that is a finishing department, and the third department I can there say that the sales department. So the output of the engineering department will go to the finishing department, and finishing department's output will go to the सेल्स डिपार्टमेंट. इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक जाने का प्रोसेस, यहाँ से यहाँ तक जाने का प्रोसेस. So here is the output is the input for them. Here is the output will be the input for this department, and this finishing department output will be the input for the sales departments. So that this type of product is also also known as the intermediary goods. Intermediaries product. So until now it just we discuss about the concepts. So where we have more than one department process to produce the goods, when we have the mass level of the production, when we have the similar kind of production, we can use all transfer goods to the except the final one. All department transfer the goods to the other department except the final, because the final is the sales department which is selling to the customer. There is no further department he will transfer. So just what I have taken an एग्जाम्पल. अब छोटा सा दो तीन बातें हैं, दो तीन डेफिनेशंस है. आई वुड लाइक के आपसे पूछ लूं सो दैट मे बी इट विल बी अ रिकॉल फॉर यू. आपने नॉर्मल लॉस, हाउ डू यू डिफाइन द नॉर्मल लॉस? Normal loss is something which is within the range of certain limits, as we can set a level that 1 or 2% loss, which is in day to day. It is a normal operating conditions. You cannot avoid it. Mm-hmm. Correct. Okay, it is likely essentially uncontrollable. You can say that. It is. Yeah, because by nature it has to happen. Yeah, you by cannot nature. extract 100% from anything. Yes. So exactly. there is certain element during conversion, the things get lost. So yes, it is a sort of uncontrollable thing. Yes. So what is the accounting treatment? It will be treated as the product cost. So it will be treated as the product cost. So it is observed by the good unit. So it is observed by the good unit. Is it okay? We are okay with this. Now abnormal का मतलब क्या होता है? It is not expected to happen in the normal efficient operating condition. Inefficiency of the
Maybe employee has done the chori, mean he has spoiled, mean he has not done the right things. It means that can be a controllable things. If you put certain controls, you can avoid these situations. इसका मतलब क्या है? The cost of abnormal should be identified and reported to the management. And accounting क्या होती है? It should be treated as the period cost, and there should be separate treatment. It is to be treated separately. अब एग्जाम पे आपका क्वेश्चन आता है, what is the how do you account for the normal? What give your suggestions or something like that. So you have to be very clear. For the normal loss, it is like the nature of the goods. You can't avoid it. It is a product cost, or it has to be charged to the good unit. The other thing is that the abnormal spoilage, it is not the nature. It is something is fishy there. It is not done in the right way. So it can be controlled if everything will go fine. It means it is to be classified as a period cost, or it is charged. It is to be separated. It is to be shown separately. It is okay now. इसको अलग से आप इनकम स्टेटमेंट पे लेके जाते हैं. यहाँ कोई मसला है नहीं है ना? Now there's a three small things that you should know that. Rework, scrap and waste. It is a very important definition. बोलते हैं rework का मतलब क्या होता है? You have certain standard, you have some expectations. If the productions is not meeting to your expectation and you have to go and redo certain things, that is called the rework. ठीक है? इसका मतलब जो आप कंडीशंस whatever be the expectations आपका था, and if you have to put the additional effort to make the things up to that mark is called the rework. अब rework करना है या नहीं करना है, इसका definition, इसका जो answers होगा ना, this decision will be always based on the marginal revenue against the marginal cost, अगर rework करके 100 रुपए में जाएगा, विदाउट रिवर्क 90 में जाएगा, और रिवर्क कॉस्ट इज 11. कैन somebody tell me what you will say? After rework you will able to sell it for 100, as if situations में you can sell it for 90, and there's a 11 for rework cost. Can somebody tell me what will be your decision? As it is, because it is not adding any value, it is destroying your revenue. But if the rework cost is 8, for sure you will recommend there is a 2 rupees addition, so I should go for the rework. What you will advise? There is a 2 rupees marginal revenue. Net marginal revenue is 2. Like, no, it's not about the fixed cost. Rework is like an additional cost. So now I am saying after rework you can sell it for 100. Without rework, as if situation, you can sell it for 90. There is a two options I discussed. One said that 11. Then you said I won't go because I am just adding 100 rupees as a revenue and my cost is going 11. So I should not go for the rework. First thing, that is clear. Now on the second question I asked, okay, what would be your answer if the rework cost goes down to 8? You say that, okay, I should go for the rework because after rework, I am able to get the net marginal revenue of 2. Is it clear? किसी को कोई डाउट है? So Miraz bhai, as far as we are able to fetch the marginal revenue from the rework, then it is fine. So you mean to say we can include it in the product cost, but what Yes. if there is a loss? You ignore, discard. No need to do the rework. That what is written ना? Rework का call जो है वो आपके इस पे डिपेंड करता है ना. What is written? So the decision to rework is always matters when the marginal revenue gain is exceeding the marginal cost.
Okay. So that is Perfect. your call only. ठीक है. Now come to the scrap. Scrap को define कीजिए. Just give me 2 minutes. बस अजान हो रहा है. Just give me 2 minutes. कॉस्ट फ्लो में कोई डाउट है क्या आपको? देखिए, आपने रॉ मटेरियल लाया, आपने लेबर खर्च किया, ओवरहेड खर्च किया, ठीक है. ये जाके एकुमुलेट कहाँ हो गया? WIP में. WIP से फिनिश गुड्स बन गया, और फिनिश गुड्स जैसे जैसे सामान बिकेगा वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ट्रांसफर होता जाएगा. दिस इज द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड. सो दिस इज हाउ द फ्लो वर्क्स. ठीक है. नाउ क्वेश्चन कम्स, अगर टी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, यानी ये अकाउंट्स के फॉर्म में है, तो कैसे काम करेगा? तो अकाउंट्स के फॉर्म में सबसे पहले हम रॉ मटेरियल का GL खोलेंगे, तो एंट्री आएगा रॉ मटेरियल अकाउंट डेबिट जो है टू AP अकाउंट, क्योंकि पैसे का ये देगा, कौन देगा? ये देगा हमको AP वाला. AP मतलब अकाउंट पेबल से आएगा. लेकिन इसके बाद यहाँ से जो ट्रांसफर होगा, तो वो किस में जाके ट्रांसफर होगा? WIP के GL में ट्रांसफर हो जाएगा. तो WIP बोलेगा भाई साहब मेरे को रॉ मटेरियल तो मिल गया. फिर WIP B बोलेंगे, WIP A WIP B में ट्रांसफर हो जाएगा. इट विल गो टू द WIP B. WIP will be say that okay, raw material I got it from raw material. Then he will write WIP A and WIP B. And once the WIP account will be seen, so WIP A have received the raw material, labor and overhead. Everything is received. And then he will transfer his output to WIP-B. तो WIP-B का अगर कोई अपना own material, labor and overhead expenses है, he will record it, and then also he will record the same. He received the WIP from the A also, he will record it. And once the all recording will done, WIP-B will transfer this to the cost of goods sold account. Cost of goods sold account is actually transferred into the finished goods. And for the finished goods, when the goods will be sold, it will be transferred into the cost of goods sold account. This is how lending system. आप क्या बोले थे? हेलो हेलो. हाँ जतिन भाई, आप क्या बोल रहे थे? बोले. हाँ, क्या बोल रहे थे? बोलिए बोलिए बोलिए. इसमें कोई डाउट है? नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला मिनाज भाई. अच्छा, ये मतलब ये प्रोसेस इज ओके ना? यस, इट इज ओके. सारा आपको समझ आया प्रोसेस? यस सर. चलो. See, I have taken one examples. I will make one process account in front of you. The others I will just ask you to do. So it is the examples that in the process 1 you have introduced 10,000 as unit, and you have output of 9,750, and you have an expected loss of 9,750, and what is the expenses you are incurring? So material you are spending, so you will make a process account. Okay. So process 1, labor is how much? 6,000. Manufacturing overhead is 10,000. Okay. So altogether, how much is your expenditure? 20,000. Okay. So now you have a 10,000 of input. You have output of how much? 9,750. No, first you will allow for this. भाई, ये तो 60,000 हो गया ना. अच्छा, ये 40 है. 40 में 60 कैसे हो जाएगा? 40, 50, 56,000 हो जाएगा. It will be 56,000. 56,000.
हाँ, तो 10,000 का हमारा इनपुट था and I have a normal loss of 200, so I will allow for the normal loss. So I should get how much unit? 9,800. But actually I have output of 9,750. इसका मतलब क्या है? 50 ये जो is है my नॉर्मल स्पॉइलेज। abnormal loss है. Okay, now how the costing will done? Can somebody tell me? 56,000 divided by 9950. First of all, Hmm. normal loss, you don't need to provide any value. You don't need to provide any value. Now for abnormal loss. And now for the transfer out. आप वो एंट्री के So बारे this में बात करें मिराज भाई, 5600. वो So विप में 5 कैसे फ्लो करेगी? value बताइए. Dollar value. 5 rupees 60 halala. नहीं, I will just come 560 halala also. So ये 56,000 जो costing आ रहा है, this is for how many unit? No, you have to allow for the normal loss. So you will assume that this is actually costing for 9800. Because I said that normal loss is actually a loss in the efficient situation, means आपको उसका कॉस्ट किसको चार्ज करना है? गुड यूनिट को. So this 56,000 divided by, हाँ, तो 5600 divided by 9800 multiply by 50 because you have a 50 unit of abnormal loss. So you will do the 50 unit of abnormal loss. So what is the value coming? 56,000 divided by 9800 into 50. It means you have a abnormal loss value is how much? 285. Abnormal loss value is 285. How it came? 56,000 divided by 9800 multiplied by 50. So 285. So 56,000 minus 285. What is the good value? What is the transfer out? 55,715. 55,715. So this is the transfer out for you. कोई डाउट है तो पूछे, बताएं. हेलो, फिर से बताऊं? एक्सेल पे बता दूं? एक्सेल पे बताओ Yes, मिराज sir. भाई, थोड़ा सा ना इसमें कंफ्यूजन हो रही है. चलो, सबसे पहले आप बताओ, यूनिट आपने कितना इनपुट किया था? 10,000. 10,000. मटेरियल कितने का था जी आपका? 40,000. 40,000. लेबर एंड ओवरहेड कितने का था? 10,000 और 6,000 था एक अमाउंट. 6 और 10, ठीक है. 1000 एंड 10,000, ठीक है. अब आप पहले तो क्वांटिटी रिकंसिलेशन करो. आउटपुट के साइड में आ जाओ. तो आपकी यूनिट क्या बोल रहा है? ट्रांसफर आउट यूनिट कितनी है? ट्रांसफर आउट कितनी है? 9750 है ना. और आपको कानूनन जो आपके क्वेश्चन के पैटर्न के हिसाब से आपको नॉर्मल लॉस कितना प्रोवाइड करना था? 2% का. 2%. 2% का. 2%. अच्छा, ये 2 है, सॉरी, ये 2% का करना था. इसका मतलब यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस कितना हो गया? 50. अच्छा, क्लियर, डन. नाउ इट्स कम्स टू द अकाउंटिंग कि हम वैल्यू कितना देंगे. सी, रूल के हिसाब से दिस नॉर्मल लॉस इज टू बी बेयर्ड बाय whom? Is good unit. Good unit. Good unit. So it means
I have only unit that will be sharing the cost is which one? 97 plus abnormal loss. So cost per unit, if I want to know what is the unit, I will say that okay, this divide by bracket under this plus this. Per unit, you got it? Now you said I have a 50 unit ka loss, abnormal loss. So you do this, and this is you multiply by this. So this cost is matched now. Hmm. So this is our process one account. Process one. कोई डाउट है बताएं? नहीं कोई डाउट. ठीक है ना? चले, तो ये होता है तरीका टू calculate the cost. So this I have done. Now coming to the second process, just we will do the calculation on quantity. So in the second level, what is the unit you are producing? You have input how much unit? In the 94. second process, you no in 9400 is your output. 9,500 होना चाहिए. See, in the second level of process, what should we, how it will work? Let's see. Here your input is how much? 9750. Is it okay? Okay, but your output is 9400. Is 9400, and your normal loss is 5%. So actually you have the which situation? गलत जा रहा भाई, गलत You जा have कैसे गलत जा रहा है बताएं? मटेरियल में 10,000 का आएगा ना. नहीं नहीं, कैश अभी हम कुछ नहीं लिख रहा. नहीं, मटेरियल क्यों 10,000 आएगा भाई? अब नाउ यू गॉट द मटेरियल इनपुट फ्रॉम डिपार्टमेंट 1, इनपुट फ्रॉम प्रोसेस 1. I'm not doing any costing as of now. I just want to do the reconciliation on unit. So reconciliation of unit saying that you have an input of 9750. By the same time, it means you have a unit of 9750 and you have a normal loss. Normal loss is how much? 5%. So it means you have to provide the 5% normal loss. It means what unit you should expect? You should expect 9,262, but output happened how much? Output is 9400. So what is the extra output you got it? This is abnormal spoilage. It's an abnormal gain. This situation will call abnormal gain. This situation will call abnormal gain. So you have to write here abnormal gain. How much? 137.5. Now both is matching. Now the reconciliation of unit is done. So this is the situation of abnormal gain. So
This is the one question. Now from the exam point of view, what is the important? The exam point of view, you should know about the valuation of inventory under FIFO or LIFO. Under FIFO or LIFO. Okay. So first of all, I just want to highlight what is the formula for physical flow. So physical flows always say that opening WIP plus transfer end equal to closing WIP and unit transfer out or completed. So opening plus transfer in is equal to transfer out plus closing WIP. Do you have any question on this? इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट फ्लो या फिजिकल फ्लो, व्हाट यू से? ओपनिंग प्लस ट्रांसफर इन इज इक्वल टू ट्रांसफर आउट प्लस क्लोजिंग WIP. Do you have any problem in this? No. No. Now we will just want to know in the current period he has started with 15,000 unit. He is started with 15,000 unit as a opening and completed 10,000 unit. Completed 10,000 unit, leaving 5,000 unit, which is just 30% complete. Which is just 30% complete. So how many equivalent production he is done? It means he has started with 15,000 khalli walli. He has just done 10,000 full plus 5,000 का 30%. यानी कि 1500. 11,500 unit he has done. How much product he has done? 11,500. Yes, that is called the equivalent production. That is the equivalent production. Do you have any question with the equivalent unit? No. Now I'll come to the methods. There is a two methods. One is called the FIFO. The other is called the weighted method, weighted average method. There is a two way of doing the equivalent unit calculations. One method is called the FIFO method. The other method is called the weighted average method. The FIFO methods is what is the process? First in, first out. Is it? Is it? Yes. Okay. There is a assumption says that FIFO is more accurate. He is saying that FIFO is more accurate than the weighted average cost. Now first I will discuss with you weighted average cost, how you will calculate the EUP, equivalent unit of production, and that is a very important, equivalent unit production. So let's have a question here. You have a opening WIP where you have a material and the conversion cost. You have a material and conversion cost. Material you are just completed 40 in the beginning, and you have a closing just to have, you have just completed 20% in the beginning. During the year you have a started production started is how much? 6,000. It means whatever the unit you had 300 in the beginning, you have started with how much? 600. It means 6,300 you are expecting. 6,300 you should have. He said that 5,400 you have made and transferred, and balance now 900 in your closing stock. If you add these two numbers, you will get 6,300. It means quantity wise it is reconciled.
quantity wise it is reconciled as a opening plus input is equal to transfer out plus closing. Is it okay? Prasad bhai? Up till here is okay. Yes. बट हाँ, मिराज भाई जितना आप सिंपली बता रहे हो ना, यूनिट स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड, वो होता नहीं है, वो उससे बहुत बहुत टेढ़ा इजी होता है। है। आपको बस अभी के बाद से जो ध्यान देने वाला लाइन है ना, अभी मैं ध्यान देने वाला सिर्फ आपको फोकस पॉइंट बताऊंगा, और एक जहां भी आप क्वेश्चन उठाएंगे मैं आपको एक दो पास्ट पेपर्स पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन भी बताऊंगा, आपको क्या इंफॉर्मेशन उससे पिक करना है। दी सी उन लोग जान से बहुत सारा इंफॉर्मेशन देते हैं, बट ओनली यू रिक्वायर्ड द पिक व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। Agreed. Okay. ठीक है, तो अभी हम चलते हैं। हमने पहला जो काम था मेरा था कि क्वांटिटी हम रिकंसाइल कर पा रहे हैं ना, हम लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं, क्वांटिटी रिकंसाइल कर पा रहे हैं, दैट इज फर्स्ट थिंग। आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग कि आपको क्वांटिटी रिकंसाइल करने आना चाहिए। ठीक है, सेकंड आप आते हैं कि आइए अब हमको निकालना है ईयूपी। तो ईयूपी निकालने का इसमें एक फार्मूला है, इसमें एक लॉजिक लिखा गया है। बोला गया है कि इक्विवेलेंट यूनिट इज इक्वल टू यूनिट कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड प्लस इक्विवेलेंट यूनिट रिमेनिंग इन डब्ल्यूआईपी। तो कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर प्लस यूनिट इन डब्ल्यूआईपी। तो कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड इज हाउ मच 5400। तो आपने लिख लिया 5400। अगर मटेरियल का पूछा हमसे तो हमने मटेरियल का लिख देना है नाव का 9 छक 54 9 छक्का 54 यानी कि 540। ये हम दोनों को ऐड करेंगे, आई विल गेट इट फॉर द मटेरियल। ऑन द अगर हमसे कन्वर्जन इफ दे आस्क, बिकॉज जो कन्वर्ट होके चला गया इट मींस इट हैज कंज्यूम्ड ऑल द रिसोर्सेज ईदर मटेरियल और कन्वर्जन। सो यू वी डोंट नीड टू थिंक अबाउट देयर परसेंटेज, ओनली वी नीड टू थिंक अबाउट द क्लोजिंग पोर्शन में क्या कंप्लीट है। सो लेट्स से 54 चला गया यानी 54 इट्स गॉन। What is left? Left is 900 on which conversion is how much completed? 30%. इसका मतलब I need to add only how much? 270. It means 5670 is my equivalent unit for conversion and 5940 unit for material. Okay, so this process is called the EUP calculation under the weighted average costing. Under the weighted average costing. Now I will check how much dirham per cost. So first of all, you will just write the opening cost from the beginning. So material whatever given you add it, conversion whatever given it is added, whatever you have added in the current period you just added it. So you will get the total cost of material plus total cost of conversion. So total cost of material you got 124,750 and the conversion you got 5,050 from this question. 6190 plus 118 6119 plus कितना है 6119 था, हाँ 6119 plus 118621 118621 6119। इसका मतलब दोनों को ऐड कीजिएगा यू विल गेट 124,740। उस पे आपने इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड करना है तो आपको क्या पता चल जाएगा? cost per equivalent unit of material, cost per equivalent of conversion. When somebody asks if costing bata do, then I will add this together and I can say that 36 rupees per unit is the cost of production. Are you okay with this? नहीं भाई माइंड में नहीं आया ये वाला। माइंड में नहीं आया, ये सही सा। देखिए ये कैलकुलेशन कहाँ तक आपको माइंड में आया वो बता दें। टोटल तक के तो आ गया 61193900 1183430। दूसरा शीट खोलना आप। हाँ ये दिन दोनों का टोटल हो गया। इसके बाद में जो इक्विवेलेंट यूनिट आए 5940 ये हाँ। कहाँ से आया और 570? अरे वो पीछे के किताब से आया भाई।
59405670. ओके, फिर इसे डिवाइड किससे किया? टोटल जितना टोटल आया था उससे डिवाइड कर दिया। 209790 से। नहीं रे बाबा, मटेरियल का मटेरियल से करेंगे, कन्वर्जन का कन्वर्जन से करेंगे भाई। एक मिनट, 1,24,740 डिवाइडेड बाय 5940 85 डिवाइडेड बाय 5670. ओके भाई, ओके, डन। आ जाए। या फीफो 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 इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा बंदे गलत करते हैं फीफो में। एक बार क्वेश्चन रिकॉल कर लीजिए। So I have here one question here, Raj bhai. So this we are considering there is no unit prices given, right? The finished good pricing is not given, so we consider as a one, right? $1. No, it's not about the unit price. Where you are going now? Unit pricing, where you are wanting? No, you are divided. Yeah, This I just question has asked me, give me the cost under, give me the schedule of cost. Okay, give me the total cost per equivalent unit. So I have calculated based on the productions. Equivalent unit production for the material was 5940 and conversion was 5670. And my cost was 6119 for material and 1118 was for material. So if you add these two, it is the actual cost for the material. This is the actual cost for the material. Divide by 5940. If you do, you will get the 21 rupees for material per unit of material. Okay. Miraj bhai, to put it Same way you have to simply, do. equivalent unit of production is nothing but that whenever there's a processing of unit and I'm doing my month end or whatever period end, then Yes. there is a certain level of production which has not happened. So in order to calculate how many units have been completed, I come up with this You are equivalent unit of production. converting. Yeah, exactly. I'm just converting on the and now there are two methods. One is the weighted average and another one is the FIFO. Now my question to you is, what is the basic difference between these two methods? Okay. Between First of FIFO all, and weighted average. See, FIFO is covering what exactly? FIFO says that you are not knowing which unit you actually sold and when. Okay. FIFO does not follow any standard, any, when you say the material outflow, material का जब आप पढ़े होंगे, see, आपने 1 तारीख का 5, 4 तारीख का 5 तारीख का 3 बिजनेस डे पे काम करते हैं, 4 बिजनेस डे पे आप काम करते हो, ठीक है. यू ब्रिंग सम 100 यूनिट, you sell 50, you bring 200 unit, you sell 100. Okay, and there is a cost, say 4 and 6. Now you give me the valuation under the FIFO. Under FIFO. So FIFO says that you are selling first in, first out. You will sell first in, first out. So in this question, first in this, first out this. Is it okay? Means out of this 100, you sell 50. It means you have a 50 unit left from the beginning of 4 rupees wala, and out of 300, how much you sell 100, and you have a balance left over as left over inventory is 200, वो 6 रुपए वाला. इसका मतलब यार ये किसका हो रहा है? 200
I don't know. So the 200 will come like from subtracting 300 minus 100. Yes, exactly. So it means this is the total inventory value. If you know all the movement, you can say that this is my inventory value under the FIFO. You will know that if you know all the movement, you can simply say that this is 1400 valuation of inventory under FIFO. Now the question comes, if you don't know which item you sold, so you will follow the weighted average method. Weighted average Okay. method. You don't, I have a question here. yeah. So when you are having 100 inventory 100 on first Mm. and you sold on 50, the remaining 50 Mm. will be sold on when you are selling 100. So it has to go from here, right? That Yes, remaining. exactly. The first 50 will go, no, but this 100, yeah, this first 50 will go from here. Exactly. You are right. So it means there will be the, again, you will go from here and you will not have zero inventory. It means you have a zero inventory from here and you have a inventory from here 250. मिराज भाई आपकी स्क्रीन means- जो है ना वो नहीं दिख रही. अच्छा वो जो पहले वाला था वो लिफो था. नहीं, जो भी था वो गलत था. छोड़े हटा. नहीं वो लिफो का मेथड था ना. नहीं वो गलत था, वो छोड़े हटाए. अभी जो हम लोग को करना है दो कर लेते हैं ना. 1 तारीख को हमने 100 लाया, वी सोल्ड 50, 100 में से 40 बिका, 50 मेरे हाथ में इन्वेंटरी रह गया. अब नाउ ऑन 3 वी बॉट 300, वी सेल 100, बट ये 100 में सबसे पहले ये 50 बेचूंगा, देन उसके बाद जो है बाकी का और 50 कहां से बेचूंगा. दिस 50 फर्स्ट विल गो एंड बाकी का 50 विल गो आउट ऑफ दिस. Baki second 50 will go out of this 300. It means this 300 will be the leftover item at the rate of 600. It means my inventory is 1500. If I know all the movement, I will use the FIFO and I can get it what is the inventory I have. Now I don't know what is the inventory I have now. So what is the process I will be follow? I will be following the weighted average method. Weighted average method you don't follow when you don't know the mix, how, when, which item has gone. You can just simply follow the weighted average. So how the weighted average work for this question? Let's have a. So first of all, when you bought the item in the beginning, you have a inventory value of 400. When you sell the मिराज भाई 400, आपकी स्क्रीन नहीं नजर आ रही. प्लीज शेयर योर स्क्रीन. no, it is a sharing, na. अरे ये चल रही है अब बंद. We can Now see. now again I started the screening. निक्की बंद करो आवाज. मुझे निक्की आवाज कम आपकी करो. स्क्रीन नजर नहीं आ रही. अभी जा रही होगी. I think Jatin, you need to reload maybe. We can see. ओके ओके ओके. Okay, I can see it now. Sorry. Miraz bhai, I can see it. Sorry. Yeah. Screen is going. Yes, Miraz bhai. Yeah, we can able to see. Now under weighted average, if I don't know the movement, how I will do? ये 400 का इन्वेंटरी आपको समझ आया. अब 450 हम बेच दिया. So simply my costing will be like this: divide by 100 multiply by 50. So what is the balance now I am carrying? 200. And then I will be adding the value 1800. Now I have to sell 100. What is the value I will give? I will give that, okay,
this 2000, I will say that this 2000 is the value divided by 350 multiply by 100. So my balance inventory will be 570. So this is the closing inventory under weighted average method. Under weighted average method. So this मिराज भाई इसमें भी ना दो प्रॉब्लम्स होती है कि एक तो इन्वेंट्री एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर होती है और एक इन्वेंट्री ड्यूरिंग द ईयर होती है. नहीं, तो उसमें कैसे ड्यूरिंग द percentage ईयर लेनी तो है? नहीं होते हैं, बिगनिंग ऑफ द ईयर होंगे, ड्यूरिंग ऑफ द ईयर क्या होते हैं? मेरे पास ना एक चार्ट है which I referred last time. I'll try to share that chart with you in which if you follow that chart ना you exactly know कि opening WIP में under FIFO method आपको कितने परसेंटेज उठाना है, कैसे उठाना है. नहीं वो This will help. मैं बता रहा हूँ. देखो वेटेड में तो ओपनिंग की इग्नोर करनी है, खल्ली बल्ली, मेरी बात सुनो. हाँ. ओपनिंग इग्नोर करना है. अभी जब मैं वेटेड में आऊंगा ना, आई विल गिव यू अ ट्रिक. वो एग्जाम Okay. वो क्वेश्चन छोड़ देने का. अभी आपको खाली मैं समझाने का कोशिश किया कि इफ यू नो के दोनों में कॉस्टिंग कैसे आती है, फर्स्ट थिंग यू नो, नाउ यू नो द कॉस्टिंग कैसे आती है. व्हेन वी आर यूजिंग दिस मेथड क्या कॉस्टिंग आएगा, क्या फर्क पड़ेगा. अब फॉर द पर्पस ऑफ ईयूपी में मैंने क्या बोला कि आपने वेटेड, जस्ट नाउ आई हैव डिस्कस्ड ओनली द वेटेड एवरेज. वेटेड में मैंने आपको क्या बोला, भाई कुछ नहीं करना, ओपनिंग ऑल इंफॉर्मेशन इज इररेलेवेंट फॉर यू, इररेलेवेंट फॉर यू. क्लियर? फर्स्ट लाइन क्लियर है. सेकेंड में क्या लेना है, दो इंफॉर्मेशन लेना है. कितना यूनिट आपका कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड है, दो इंफॉर्मेशन लेना है. कितना यूनिट कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड है, कितना आपका क्लोजिंग में बच गया. दैट इज द ओनली टू इंफॉर्मेशन यू रिक्वायर्ड. बाकी जितना भी ज्ञान है सब छोड़ देना है. क्लियर? ये हो गया. तो इस पे हमने आज डिस्कस द क्वेश्चन. नाउ मैं जब वेटेड इस पे आऊंगा, फीफो पे आऊंगा, तो फीफो एकदम आसान कर दे रहा हूं आज आपको. ठीक है. मैं पहले बोल रहा था कि इस क्वेश्चन को अगर आप समझ लो, अगर ये पहले से 40% कंप्लीट है, बिकॉज दिस इज इन द बिगनिंग, आपका पहले से कंप्लीट है, तो इस साल आपको आगे का काम करना है. यू हैव टू डू द फर्दर वर्क, आगे का काम, सब्सिक्वेंट वर्क. तो इफ द 40% is completed, how subsequently you will do? 60% you will do. अगर ये conversion is 20% completed, then how you will do? How much you will do? 80%. ये दो बात क्लियर है कि नहीं है? Okay. Clear. Whatever the completed, ignore. Whatever the balance you have to do, you have to do. क्लियर हो गया? पहला चीज ये करना है. सेकंड क्या चाहिए, मैंने कितने यूनिट ट्रांसफर करें. 5400 I have transferred. 5400 I have transferred. तो फीफो बोलता है कि भाई तुमने 5400 ट्रांसफर तो किए, लेकिन इसमें तो वो 300 तुमने ट्रांसफर किए थे ना, जो पुराने वाले थे, विच वॉज फ्रॉम द ओल्ड स्टॉक. यानी कि तुमने करंट के स्टॉक से सिर्फ 5100 पे काम किया. कितना पे काम किया तुमने? 5100 पे काम किया. प्रसाद भाई, दिस इज ओके फॉर यू, दिस लाइन इज ओके? Yeah, okay. आपको क्लियर लग रहा है ना? Yes, I understood. सो नाउ आई एम सेइंग कि यू ट्रांसफर्ड. अब आते हैं इसकी कॉस्टिंग कैसे होती है. इट्स वेरी इजी. देखिए कैसे करना है. सो आई एम सेइंग कि आपने 60% कंप्लीट करना है. सो फॉर 300 you have to just work for 60%. It means you have to work for 180 unit of raw material. Now on 300 you have to work only 80%. You have to work because 20% you have already worked. It means 240 units on the conversion you have to work.
Then I said, okay, my brother, 5400 you have made and transferred. It'sco you have to split and say that, okay, 300 from the opening and 5100 from the subsequent. इसका मतलब ये opening का तो हिसाब हो गया. Now for the subsequent you are writing 5100 for 100% because if it is not done 100%, it cannot be transferred to the finished goods. इसका मतलब है कि it's 100% completed from all the aspect. Now in the closing, whatever the closing inventory is given and the completions, you have to write it here. Just add it, you will get the equivalent unit of production. अब देखें एग्जाम में जो आपको देता है कि इवेंटली इंट्रोड्यूस इन द बिगनिंग, तो मटेरियल अगर इंट्रोड्यूस इन द बिगनिंग दिया रहता है इसका मतलब है कि आपने 100% मटेरियल यूज कर लिया है इवन ऑन द क्लोजिंग स्टॉक ऑल्सो. ओके, एंड एग्जाम में क्वेश्चन में कहता है कि मटेरियल इज इंट्रोड्यूस इवनली, इसका मतलब हो गया कि ये वाला बात है, जितना आपने कंप्लीट किया उतने पे आपने क्या कर दिया है, मटेरियल अप्लाई किया है. अगर क्वेश्चन में ये कहता है कि मटेरियल हैज बीन इनकर्ड ऑलरेडी, तो आपको ये वाला पोर्शन इग्नोर करना पड़ेगा बिकॉज यू डोंट रिक्वायर टू इनकर्ड एनीथिंग ऑन द मटेरियल एज ऑफ नाउ because this has been incurred last year. So the question will be clearly telling to you what you have to do. But इस पूरे सवाल को समझने के लिए you have to follow this. हाँ जी बोलें. जतिन भाई बोलें. नहीं मिराज भाई मैंने कुछ नहीं बोलना. I have a question here. Like, then how do you reconcile 5,400 units here? Because the number it's not able to. There's two things you have to do before starting the question. Okay. Then you will not able to have this type of misunderstanding. देखिए क्या बोलता है. First you have to do the reconciliations of the units. That how you will doing the reconciliation of the unit. Okay, what is the opening you have here? 300. What is the opening you have? 300. That what I have shown in the beginning also. Yeah. किधर गया भाई? Page number 40. See. So it is in the beginning. Okay. So first work you will do 300 plus 6,000 is how much? 6,300. On the second side 5,400 and 900. That is the first thing you will do to check the both the end. That is called the physical flow of the units. इसको क्या बोलते हैं? फिजिकल फ्लो ऑफ यूनिट्स. पहला काम. Okay. सेकेंड, व्हेन इट्स अ फीफो, जब ये फीफो होगा, व्हेन इट्स अ फीफो यू हैव टू, बिकॉज यू नो दैट 5400 हैज बीन ट्रांसफर्ड. इसका मतलब इट हैज टू आइटम, वन फ्रॉम द ओपनिंग, द अदर फ्रॉम द सब्सिक्वेंट. इज दिस क्लियर? Yeah. So opening, since we are doing separately, so I don't need to work on the opening now. Only for the subsequent 5100, I have to take 100%. Okay. That what I have taken here. So this 5100 I have taken here na as a subsequent. Okay. Bole? I got it. Yeah, got it. And the cost you have taken, cost incurred during the period. So you have taken the total value of that. Okay. Yes. That Not which includes from the that. opening. Not Yeah. opening. Only the incurred during the year, because the opening you have to ignore here. Yeah, which includes that 60% of material and 80% of conversion cost. Yes. Because whatever the required, you incurred it.
Okay. ठीक है. Yeah, got it. Lean production environment, FIFO and weighted will give the similar result because you are not keeping any inventory. You are not keeping any inventory. Lean production का भाई, हाँ वो जो आपने एक्सेल में वेटेड एवरेज का किया था, जी सर बोले. वो ये जरा एक ये जो 571 की आई अमाउंट, ये कहाँ से आई? अरे यार ये ऐसे आ गए भाई, ये यहाँ पे F2 लगाने से पता चल जाता है. ओके, ठीक है. अब देखिए दो लीन प्रोडक्शन का कोई दूसरा नाम बता सकते हैं क्या आप लोग? लीन प्रोडक्शन का कोई दूसरा नाम बता सकते हैं? GIT, I am just assuming. करेक्ट एजम्पशन. JIT में पता है ना, हम लोग इन्वेंटरी नहीं रखते हैं. Correct. वो as and when the inventory is required, we हाँ order it. we order it. तो उसमें क्या होता है, we- कॉस्ट सिमिलर होता है. ठीक है. अगर हम कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो FIFO इज सुपीरियर टू द वेटेड एवरेज बिकॉज इट डज नॉट मिक्स द कॉस्ट ऑफ द करंट पीरियड एंड द पास्ट पीरियड. तो FIFO जो होता है वो मिक्स्ड अप कॉस्ट नहीं होता, वो करेक्ट कॉस्ट होता है. ठीक है. Okay. लेकिन अगर हम वेटेज लेंगे तो मेरा वो कॉस्ट मिक्स्ड अप हो जाता है. ठीक है. अब आ जाते हैं ज्वाइंट कॉस्ट एंड बाय प्रोडक्ट पे. ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट पे आप लोग का कुछ आइडिया है? देखिए यहां तक मटेरियल, लेबर, ओवरहेड खर्चा करके यहां पर ये लाए, इसको स्प्लिट अप पॉइंट बोलते हैं. तो स्प्लिट अप पॉइंट का डिफिनेशन क्या होता है बताएं तो? जहां पे आके कॉस्ट क्या हो जाता है, जहां पे आइडेंटिफिएबल प्रोडक्ट बन जाता है और कॉस्ट को स्प्लिट करना पड़ता है ना. जहां पे आके कॉस्ट को स्प्लिट करना पड़ता है आइडेंटिफिएबल प्रोडक्ट पे, दैट इज कॉल्ड द स्प्लिट अप पॉइंट. अब बात आता है कि ज्वाइंट प्रोडक्ट क्या होता है और बाय प्रोडक्ट क्या होता है. So it will be in okay, petroleum products or something like that. Yeah, this is an example of the petroleum. I have also taken the petroleum, but joint product or byproduct में क्या होता है कि sometimes if you have the main product like same type of two product you are making, when the one product process lead to the product of two or more product, they are not identical but they shares the same production process until a split of point. तो क्या होता है, दोनों आइडेंटिकल नहीं है, दो डिफरेंट प्रोडक्ट है लेकिन एक प्रोसेस में साथ में काम होता है, दैट इज कॉल्ड द ज्वाइंट प्रोडक्ट. बाय प्रोडक्ट का मतलब होता है इट इज अ ज्वाइंट प्रोडक्ट बट हैविंग द लो सेल वैल्यू, हैविंग द लो सेल वैल्यू. ठीक है. स्प्लिट अप एट विच द टू और प्रोडक्ट स्टॉप शेयरिंग द सेम प्रोसेस. यहाँ से क्या होता है, आइडेंटिफिएबल प्रोडक्ट स्प्लिट होके अलग हो जाता है. अब आता है देयर इज अ 4 वे ऑफ अलोकेटिंग द कॉस्ट. कितना कॉस्ट शेयर करने का तरीका है, देयर इज अ 4 वे ऑफ. राज भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज 5 मिनट की ब्रेक दीजिए. ओके. हाँ एक्चुअली आई एम सो सॉरी गाइस, आई हैव टू परफॉर्म माय इवनिंग प्रेयर. आई विल जस्ट टेक 5 minutes. ओके नो प्रॉब्लम. Is it possible for everyone? यस यस. Yeah, I'm not yeah, demanding it. हाँ. Problem, no अरे problem. नहीं,